that is the meeting life challenges. In this chapter, we will cover a bunch of topics. In the first topic is the basically introduction. In introduction, we'll get to know what is stress, what is the nature of stress, types of stress, and what are the different sources of stress. And next topic will be effects of stress on psychological functioning and health. Basically, एक इंडिविजुअल की बॉडी पे है, उसकी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग पे एंड उसकी फिजिकल बॉडी पे एंड हेल्थ पे क्या स्ट्रेस इफेक्ट डालता है. इस टॉपिक के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स है. लाइक फर्स्ट टॉपिक इज द एग्जामिनेशन एंजाइटी, देन कम्स स्ट्रेस एंड हेल्थ एंड हाउ दे आर कोरिलेटेड. Then comes the general adaptation syndrome. General adaptation syndrome is the most important topic of this chapter. And then comes stress and immune system and how stress affects the immune system, lifestyle. Another topic we are going to cover in this chapter is coping with stress. That is basically how a person deals with the stressful situation. What are the different stress management techniques that an individual uses to overcome a different stressful environment or a stressful situation. Last topic will be promoting positive health and well-being. Under this topic, we are going to cover life skills which are required for healthy body and healthy mind, resilience and health. In this topic, we are going to study about nature, types and sources of stress. Here, an example is given of crossing the road on a Monday morning. Let's take an example of yourself. That you want to cross the road. तुम्हें रोड क्रॉस करनी है. तुम रोड क्रॉस करते समय स्ट्रेस में क्यों होगे? क्योंकि तुम्हें पता अगर तुमने रोड क्रॉस ढंग से नहीं की सो देन यू कैन गेट इनटू अ फेटल एक्सीडेंट. You were in stress because you knew that if you didn't cross the road properly, you can get into a fatal accident. So while crossing the road properly, you were alert, vigilant and aware about the danger you can get into if you were not able to cross the road properly. So this alertness or vigilant motivates you to cross the road properly while looking here and there. So faced with any challenges, we put in additional efforts and mobilize all our resources and the support system to meet the challenges. All the challenges, problems and difficult circumstances put us to stress. कोई भी ऐसा चैलेंज या प्रॉब्लम या फिर ऐसे circumstances जिनसे हम पहले कभी नहीं गए हैं और we never have coped with it up puts us to stress. Okay. So thus, if stress is handled properly, stress increases the probability of one's survival. Stress ना इलेक्ट्रिसिटी की तरह होता है, बल्ब की तरह. ठीक है, आपने अपने घर में 40 वॉट का बल्ब लगाया. अब उस 40 वॉट के बल्ब में अगर सिर्फ 40 वॉट जितनी ही इलेक्ट्रिक करंट आएगा जितना उसको रिक्वायर्ड है, देन वो बल्ब अच्छे से काम करेगा, लाइट अच्छे से देगा, ब्राइटन करेगा रूम को. बट अगर उस 40 वॉट की बजाय ज्यादा लेवल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उस बल्ब में चला जाता है तो क्या होता है? बल्ब फ्यूज हो जाता है, डैमेज हो जाता है. स्ट्रेस भी ऐसा ही काम करता है एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में. ठीक है, अगर हम इफ स्ट्रेस इज जस्ट मिनिमल एंड इज ऑप्टिमल दैट ओके, स्ट्रेस भी ना ऐसे ही काम करता है. स्ट्रेस का भी यही काम होता है एक इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर. कैसे? इफ स्ट्रेस इज मिनिमल, कि स्ट्रेस उतना ही है जितना एक इंसान को और एक इंडिविजुअल को रिक्वायर है टू अचीव द पीक परफॉर्मेंस, then stress is good. Like then stress will give you energy, increase your human arousal and definitely affect your performances. But however, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट जब ज्यादा डला तो डैमेज हो गया ना, अप्लायंस पूरा डैमेज हो गया, बल्ब फ्यूज हो गया. वैसे ही अगर स्ट्रेस एक इंडिविजुअल में ज्यादा अमाउंट में चला जाता है, वो डिस्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारी परफॉर्मेंसेस को डिटेरॉइट कर देता है. वो हम Eustress is the term used to describe the level of stress that is good for you and is one of a person's asset for achieving peak performance and managing minor crisis. Eustress एक अच्छा स्ट्रेस होता है. ठीक है,
जो बहुत ज़रूरी होता है एक इंसान के लिए ताकि वो अपनी पीक परफॉर्मेंसेस दे सके. ठीक है, बेस्ट एग्जांपल लेते हैं एग्जाम्स का. ठीक है, हर बच्चा स्ट्रेस में होता है जब उसके एग्जाम सर पे होता है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दैट you have an English exam tomorrow. You haven't studied at all. You just have 24 hours and you start getting stressed right now that you are panicking, like you don't know what you're going to do, that you have an exam tomorrow, you don't know how you're going to pass the exam or even if you're going to pass the exam or not. So this stress motivates you that you have to start studying at least now so that you can pass your exam tomorrow. So what you do in this situation, you start studying right now. And when you start studying right now, so by the evening or by the night, you were able to complete at least half of the syllabus or most of the portion of the syllabus. So when you gave your exam tomorrow, you were happy that you are going to pass in this exam. So this was an example of eustress. In this situation, what happened? You panicked when you knew you haven't studied at all for your tomorrow's exam. You start this panicking or this level of stress. This panicking or this level of stress is known as eustress. Because of the eustress, you start studying and whatever you studied, you wrote the exam and you passed. So this was eustress. But eustress has the potential to become distress, and distress is the bad side of the stress. Okay, so it is the later manifestation of the stress that causes our body wear and tear. ये डिस्ट्रेस होता है जो हमारी बॉडी को वियर एंड टियर, यानी कि डिस्ट्रेस ही हमारी बॉडी, हमारी हेल्थ और हमारी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, ना कि यूस्ट्रेस. So distress का क्या एग्जाम्पल है? Let's continue the same example but in a different way. You have your English exam tomorrow. You haven't studied at all, but you are panicking while studying. You are panicking again and again. Like you are trying to study. You are trying to study it at least a little bit so that you can pass your tomorrow's exam. But this stress, like this panicking is not allowing you to study properly. Like you are reading a chapter of your English book or your English literature. तुम चैप्टर पढ़ रहे हो लेकिन तुम्हारे दिमाग में वही बात घूम रही है कि तुम फेल हो जाओगे, तुमने कुछ नहीं पढ़ा, क्या होगा मेरा, मैं पास भी हो पाऊंगा कि नहीं, इन्विजिलेटर कैसा आएगा. These are the things which is known as distress. सो डिस्ट्रेस बेसिकली स्ट्रेस होता है जो तुम्हारी साइकोलॉजिकली फिजिकल हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है. थर्ड, स्ट्रेस कैन बी डिस्क्राइब्ड as the pattern of responses an organism makes to the stimulus event that disturbs the equilibrium and exceeds a person's ability to cope. यानी कि वो रिस्पॉन्स एक इंसान उस स्टिमुलस इवेंट को देता है जो उनके माइंड के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दे और एक्सीड कर दे उसकी एबिलिटी को सिचुएशन से कोप करने की. सो दिस इज स्ट्रेस.